So, good morning, everyone. So, we'll start with our current affairs session, current affairs cum mentoring session. So, today we are going to talk about one important topic of GS3, okay, that is the resources related, that is land resource. Okay, so land as a resource. So, if we talk about land scarcity, okay, scarcity, sorry, land scarcity. So लैंड स्कैरसिटी की अगर बात करते हैं वी ऑल नो कि कितना ज्यादा लैंड स्कैरसिटी हो चुका है इट ऑल अक्रॉस अस ठीक है there are certain places where the land is abundant but still considering the rising population of the world there is land scarcity observed we are living in Pune so यहाँ पे ही आप देख सकते हो the prices of the land real estate has skyrocketed ठीक है and it has become almost near to impossible for the common people to purchase land over here ठीक है सो लैंड स्कैरसिटी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इससे रिलेटेड डेटा ठीक है तो कितना लैंड स्कैरसिटी है ओके सो इट इज सेड दैट on a global level there is tremendous level of land inequality 1% of the global rich 1% of the global rich they own almost 70% of the world's farmland ठीक है 1% of the global rich they own almost 70% of the world's farmland you will be shocked to hear that even Bill Gates ठीक है even Bill Gates has thousands and thousands of acres of land ठीक है and on that land what he does agriculture corporate farming ठीक है the McDonald's that French fries what you get ठीक है French fries are the mac aloo tikki and all whatever that you get the potatoes are supplied by Bill Gates farm okay so they are engaged in corporate farming so almost 1% of the richest people they own almost 70% of the world's farmland then if we talk about India in India 10% of the landowners 10% of the landowners they own almost 45% of the farmland in India ठीक है इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं तो 10% लैंड ओनर्स 10% land owners own almost 45% of farmlands in India basically you are farmer how much land do you own कितनी शेती है घरी 12 acres okay so decent ठीक है you are basically I can say into a large scale farmer ठीक है so in India as well 10% landowners they are owning almost 45% of the farmlands in India we know that almost 86% of the farmers in India are small farmers ठीक है small farmers means they own less than 2 hectares of land ठीक है जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम लैंड है वो स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आ जाता है ठीक है बट जो मेजोरिटी 14% है 14% दे आर ओनिंग ह्यूज चंक ऑफ लैंड ठीक है मेजोरिटी जो लैंड है दैट इज ओन्ड बाय दोस 14% ओनली ठीक है सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डेटा ऑफ लैंड स्कैरसिटी इन इंडिया नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस लैंड स्कैरसिटी इन इंडिया इसके पीछे रीजंस क्या है reasons for land scarcity in India increasing population fragmentation of land because of the rising population in India there has been land fragmentation on a significant scale for example you are owning 12 acres of land let's say you have a brother so definitely कुछ सालों बाद वो बंटवारा हो ही जाएगा ठीक है तो definitely you will be owning somewhere around 6 acres of land okay so because of this land fragmentation होता है and because of this over a period of time land scarcity भी हो जाता है ठीक है so land fragmentation is one issue then second issue is land grabbing as I have said 10% of the landowners in India they are owning 45% of the farmlands ठीक है they are owning 45% of the farmland though so some people they are under consistent they have a consistent mindset
of grabbing lands some or the other place. ठीक है, mostly Indian politicians, they own acres, hundreds and hundreds of acres of land. They mostly steal land from poor people. Recent case, you would have heard about one lady IAS officer. Huh? Okay, so her mother also owned hundreds of acres of land. She was engaged in land grabbing. Okay, so land grabbing is one such issue. It is one such reason for increasing land scarcity all across the globe and especially in India as well. Okay, then land grabbing is not just done by politicians or some powerful people. Land grabbing has also been observed by some private sectors as well. Okay, some private sector people, they are engaged into taking away the lands of the farmers for setting up their industries. Okay, for setting up industries, they usually take away the land from the farmers at a very cheaper rate, and that is also have been one reason for land grabbing. Then, land grabbing is not just done by private sector as well, but to some extent, even government has been played a role in land grabbing. For example, setting of special economic zones. ठीक है, special economic zone, we have special economic zones in Pune as well, Magarpatta city. In that, there is a special economic zone which focuses on basically export of good quality services from over there. ठीक है, good quality products from over there. तो वहां पे भी क्या है, फार्मर लोगों से बहुत सस्ते में लैंड ग्रैब किया गया है. ठीक है, as per some reports, I'm not saying that they have grabbed. ठीक है, as per some reports that they have purchased the land at a very cheaper rate from the farmers. Okay, so government also plays a significant role while ensuring it plays a key role in land scarcity in India. ठीक है, because the government projects that you would have observed, whatever the government projects have taken place, they are basically taking place at very prime locations, or you can say in the areas where there is agricultural activity being taking place. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पुणे, इफ यू टॉक अबाउट पुणे में सबसे पहले क्या था, यहाँ वहाँ सब जगह पे पुणे इज अ क्वाइट गुड एरिया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. Okay, but now what we see around us, we see a complete concrete jungle. We see a complete concrete jungle in and around us. So land grabbing by individuals, land grabbing by some private sectors, land grabbing by government also plays a key role. Because of this, there is land scarcity. Okay, and not just for settlement of the human population, and not just for economic activities, but also for other social activities, there has been land grabbing. For example, construction of dams. ठीक है, सरदार सरोवर डैम वगैरह बनाया गया, because of which lot of tribal population living in and around their lands got submerged. So that is also a case of a land grabbing. Definitely those tribal people, you need to rehabilitate them. आप उनको वहां से rehabilitate करोगे तो definitely there will be scarcity of land. ठीक है, so land grabbing has been one of the prime reason. Land grabbing has been one of the prime reason for scarcity of land in India. Okay, then second is the expansion and encroachment of farmland. Expansion and encroachment of farmland, not just for human settlement, but for other economic activities as well. Other economic activities जैसे कि mining. Okay, Jharkhand and Chhattisgarh. Chhattisgarh is supposed to be a good region for cultivation of rice and all. Okay, but now over there are a lot of mining activities taking place. So that has also been one of the reason for land grabbing. Okay, sorry, scarcity of land. Okay. Then there is also food system reconfiguration. Food system reconfiguration. फूड सिस्टम रिकॉन्फ़िगरेशन की जब बात करते हैं, so that basically focuses on contract farming. It focuses on contract farming. For example, you people might be aware that Lay's, ठीक है, Lay's chips की जो कंपनी है, it has made contracts with some farmers in Gujarat area. ठीक है, so those farmers, they have been asked to cultivate potatoes to ensure the supply of potatoes to the Lay's company. So the farmers, they are not allowed to cultivate any other thing apart from the potato. ठीक है, so that is also a case of a type of a land grabbing. ठीक है, so
that particular land or that parcel of land, it becomes restricted that you are utilizing it for cultivation of just one specific crop. Okay? So that also creates a kind of a land scarcity across us. Then there have been colonial reasons as well, past colonial reasons as well, because of which land scarcity है. जैसे कि for example, multiple claims. कौन सा ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से लैंड स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा है? जमींदारी सिस्टम. जमींदारी सिस्टम. Okay, Zamindari system, the Britishers had a policy of the Zamindari system, not just the Britishers, but the past rulers as well. They adopted the policy of Zamindari system. They asked the Zamindars to collect revenues from the farmers. ठीक है, they ensured the employment of farmers in uninhabited areas जहाँ पे वो जाके farming activities कर सके, forest area को clear करके वहाँ पे farming कर सके और वहाँ पे उनसे revenue collect कर सके. ठीक है, so as a result of which there was rise of zamindars. Okay, as a result of which we can see only 10% people are owning 45% of the farmlands in India. Okay, so zamindari system has been a prime reason. If you talk about India, zamindari system has been one of the prime reason for land scarcity as well. ठीक है, तो समराइज कर लेते हैं सारे रीजंस. सबसे पहले है लैंड ग्रैबिंग बाय पॉलिटिशियंस, बाय लैंड ग्रैबिंग बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, लैंड ग्रैबिंग बाय corporates, and even some government initiatives which leads to scarcity of land. ठीक है, then there is expansion and encroachment of farmlands. You people might be aware, Forest Rights Act 2006 के बारे में आइडिया है कुछ? Forest Rights Act 2006. ठीक है, यस या क्या है उसमें? $75 years. In India, we have Forest Right Act 2006. So what you said is absolutely correct. Under this particular act, tribals have been entitled certain land use rights. So the tribal people which are residing in that particular forest area since last 3 generations or last 75 years, they have been entitled a land area of around 4 acres. ठीक है, तो उनको 4 एकड़ की जमीन अलॉट की गई है. But over a period of time, even their population has increased and all. So 4 acre, is it sufficient for the entire tribal community? Absolutely not. So because of the rising population, फिर what they will do? They will try to expand their area into neighboring areas. ठीक है, they might even enter the core area of the national parks and wildlife sanctuaries. ठीक है, so because of this expansion of farmlands, there becomes a land scarcity for other purposes as well. ठीक है, land scarcity for other purposes as well. ठीक है, so these are the basic reasons for land scarcity in India. अभी इसकी वजह से impacts क्या होते हैं? क्या impacts होते हैं land scarcity की वजह से? क्या impacts हो जाते हैं? You can divide it into various aspects like social, economic and political. ठीक है, तो social level पे because of land scarcity, what are the impacts on social level? Increase in land disputes will be there. ठीक है, it will lead to rise in inequality. ठीक है, it will give rise to socio-economic inequalities. Right? Then sustenance, the farmlands that are available, most of the farmers will be engaged in only subsistence type of farming. So subsistence type of farming does not assure good quality of life or good standard of living. तो ये सारे social aspects आ जाएंगे because of land scarcity. Economic aspect की अगर हम बात करते हैं तो rise in real estate prices, which will be only handful of people will be able to afford. There will be less per capita income among the farming communities. For example, 86% of the farmers in India are small scale farmers. So definitely they are engaged, have a low per capita income.
Fine. So as a result of which this might also lead to फूड सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है. सो ऑल द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो भी इकोनॉमिक इश्यूज है, इसके इम्पैक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है. फिर उसके बाद पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं लैंड स्कैर्सिटी की वजह से. थोड़ा सोच के बताओ. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है. देयर विल बी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, पीपल विथ लो इनकम, पीपल विथ लेस पर कैपिटा इनकम will be engaged in some kind of other violence based activities for their sustenance, ठीक है. It will lead to revolutionary activities like left wing extremism, ठीक है. In tribal areas, for example, issues in मणिपुर, मणिपुर में क्या इश्यूज चल रहा है, लैंड इशू की वजह से ही तो इश्यूज है, ठीक है. लैंड राइट्स की वजह से तो दिक्कत हो रही है ट्राइबल एरियाज में. So because of land rights, there will be rise in disputes among the communities. For example, tribal communities of northeastern states, tribal communities in the central parts of India. ठीक है, वहां पर issues हो सकते हैं. That will affect the internal security of the country. ठीक है. सो पॉलिटिकल इश्यूज लैंड स्कैरिसिटी की वजह से ये हो सकता है. तो जीएस पेपर 3 का है, तो थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, ठीक है. तो इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी आप यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ लैंड स्कैरिसिटी देयर विल बी इनइक्वालिटी, देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है. देयर विल बी फोर्स्ड माइग्रेशन ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. क्या होता है, फोर्स्ड माइग्रेशन है, फोर्स्ड माइग्रेशन है. देन कन्वर्जन ऑफ farmland to other non-productive, you can say non-productive parts of the economy, ठीक है. It will lead to loss and damage to the biodiversity as well. जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी डाल दो, ठीक है. लॉस एंड डैमेज टू द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. सो ऑल दीज इम्पैक्ट्स आर बिकॉज ऑफ लैंड स्कैर्सिटी. फिर उसके बाद इसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से. What steps government has taken? Perfect. For accuracy. So government has started one specific scheme with respect to land mapping, that is Swamitwa scheme. Swamitwa scheme. ठीक है, Swamitwa scheme. So under this scheme, it is a central sector scheme. It is a central sector scheme. Uh, Under this scheme, the government is ensuring the mapping of each and every farmer's land, and it is providing those details to the individual farmers so that there won't be any kind of land dispute. People won't be able to grab the land. ठीक है, private sector won't be able to grab the farmer's land. For example, in Maharashtra, you people might be aware, Maharashtra government has made a specific land acquisition act. ठीक है, लैंड एक्विजिशन एक्ट से रिलेटेड, स्पेशली एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड, दे हैव मेड वन एक्ट. इफ नो person in your entire generation or in your entire lineage, if they have never ever engaged in agricultural activities, then you cannot purchase agricultural land. ठीक है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरे खानदान में, मेरे पूरे लीनियज, मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने खेती की नहीं है, एग्रीकल्चर किया ही नहीं है. सो आई वोंट बी एबल टू परचेस एग्रीकल्चर लैंड. ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं. सो बहुत डिफिकल्ट है. देन व्हाट आई विल हैव टू डू, आई विल हैव टू परचेस लैंड इन सम अदर स्टेट. ठीक है, फिर मैं वापस से दिखा सकता हूँ कि आई एम अ फार्मर इन दिस पर्टिकुलर स्टेट, सो आई कैन परचेस नाउ लैंड इन महाराष्ट्र. ठीक है. सो गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र हैव टेकन अ स्पेसिफिक स्टेप सो दैट, ये स्वामित्व स्कीम ये सेंट्रल सेक्टर है, ठीक है, बट सेकेंड स्टेप मैं बोल रहा हूँ. सो सम स्टेट गवर्नमेंट, यू कैन राइट, सम स्टेट गवर्नमेंट हैव क्रिएटेड specific laws to ensure protection of farmlands. ठीक है, to ensure protection of farmlands.
ठीक है. Then, as I said, in past, politicians used to be aware कि कौन से एरिया में कौन सा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है. ठीक है. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, इनिशियली सस्ते में जमीन खरीद लेते थे, सस्ते में जमीन खरीद लेते थे. But now what government has did, government has come up with a right to fair compensation, right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013. ठीक है. So RFC PLARR, right to fair compensation, transparency in acquisition, rehabilitation and resettlement act. I'll share the notes with you. Okay, so government has come up with this particular act. In this, under this act, government is ensuring that you are provided fair compensation. जो market के हिसाब से आपका land का value है, उस हिसाब से आपको compensation मिलना चाहिए. ठीक है. इंडिया में right to property, is it a fundamental right or a legal constitutional right? राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया में किस टाइप की राइट है? इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और इज इट अ लीगल फंडामेंटल राइट, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? पॉलिटी हुआ ही नहीं क्या यहाँ? हाँ. सी बेसिकली इन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट. ठीक है. बट नाउ बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ठीक है. लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A. ठीक है. सो अभी आप किसी का भी लैंड ले सकते हो बाय बाय लॉ, बाय प्रोवाइडिंग राइट अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन टू द अदर पर्सन. फर्स्ट इट वाज right to property was a fundamental right. You cannot purchase or you cannot take anyone's land. ठीक है. ले सकते थे provided both individuals agree and all. ठीक है. But now it is a legal constitutional right. If anyone want to sell their land, they can easily sell that. ठीक है. They can easily sell that. So government has come up, apart from this, government has come up with many other issues. ठीक है. जैसे कि abolition of zamindari system and all to ensure that land in India is intact. ठीक है. People do not face the issue of land scarcity. ठीक. So इससे related way forward बताओ अभी क्या हो सकता है? वैसे काफी इससे related way forward क्या हो सकता है? क्या करना चाहिए to ensure we do not face the issue of land scarcity? क्या करना? We first of all need to improve the governance system with respect to land. ठीक है. हाँ? Zonation should be done for particular activities. Land zonation is a very, very crucial thing that should be undertaken at a very fast pace in India. We need to focus on land zonation. That means that we need to segregate for what purpose which land should be utilized. As I said, Pune is a very agriculturally favorable land, but here we can see completely concretization at all the places. There wasn't scarcity of any kind of water. We have multiple dams over here, we have rivers over here, there is plenty of rainfall over here, the climate is suitable for cultivation of n number of crops. But now there is hardly any agricultural land left over here. Okay, so zonation, in which area we need to have what kind of development, that should be done on a prime footing task. Okay, so that is very important. So we first of all need to improve the governance structure with respect to land so that people do not grab the land of poor farmers. We need to ensure awareness among the farmers. Okay, that there are such schemes and all under which you can do the GPS mapping. Okay, GPS mapping of your land so that you have a digitalized land records. Okay, then improve the governance system, then land zonation. For each aspect, for each economic aspect, we need to have proper land. Nowadays, we are also focusing on different Awas Yojana schemes, CM Awas Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana.
So for that purpose as well, the lands that should be selected, that should be proper land. ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ चलो फॉरेस्ट एरिया में कहीं जंगल काट दिया, ठीक है, और वहां पे आप स्कीम चला रहे हो, ठीक है। देन we need to focus on community development of land areas. We need to focus on community led development of land areas. I have talked about community participation, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में हमने बात की है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन शुड बी डन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इशू एज वेल, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन राइट स्पिरिट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन राइट स्पिरिट। द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन cooperative farming. The government should focus on cooperative farming so that there is no land fragmentation issue. So all these way forward, you can write it in your own terms, in your own language. ठीक है, land scarcity से related एक बार वापस से summarize कर लेते हैं। We need to have some amount of data. ठीक है, data with respect to India, 10% of the landowners in India own almost 45% of the farmland. Major reasons for land uh, land scarcity: there is land grab by private individuals, corporates, by government for different projects, ठीक है। फिर उसके बाद impacts: there are social, political and economic impacts of land scarcity. Then what are the steps taken by the government and ultimately the way forward, ठीक है। इतना ही टॉपिक है लैंड स्कैरसिटी से रिलेटेड, इतना टॉपिक प्रिपेयर कर लो। लैंड डिग्रेडेशन हो या लैंड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ जाता है, यू विल डेफिनेटली हैव सम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स विथ यू, ठीक है। 150 वर्ड्स तो आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन लिख लेना। What policy measures can be adopted? What policy measures can be adopted to address land scarcity in India? What policy measures can be adopted to address land scarcity in India while ensuring sustainable development? While ensuring sustainable development. ठीक है। So the question is, what policy measures can be adopted to address land scarcity in India? तो पहले तो इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? डेटा, ठीक है। ट्राई टू यूज सम डेटा in India. There is this amount, this much of land owned by these many people, ठीक है। So that will set the tone for your answer. Then what policy measures can be adopted to address land scarcity in India? ठीक, so way forward मतलब directly यहाँ पे पूछा जा रहा है what policy measures can be adopted, ठीक। so way forward में जो चीज है वो directly आप policy measures में लिख दो, ठीक है। these measures can be adopted for addressing the issue of land scarcity in India, ठीक है। while along with that you also have to relate to sustainable development. so इसको आपको यहाँ पे relate करना है sustainable development goals को। कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो? सस्टेनेबल सिटीज, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, पहला गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नो पॉवर्टी, ठीक है। इफ पीपल हैव लैंड देन डेफिनेटली दैट गिव्स सम काइंड ऑफ प्राइड टू द पीपल, ठीक है। सोशल एक एस्पेक्ट रहता है कि भाई इसके पास तो जमीन भी नहीं है, ठीक है। एंड डेफिनेटली पीपल ओन सर्टन अमाउंट ऑफ लैंड देन डेफिनेटली दे आर पुअर, ठीक है। तो इंडिया में पुअर का भी एक कैटेगरी है दैट इफ यू आर ओनिंग दिस स्क्वायर फीट ऑफ लैंड देन डेफिनेटली यू आर नॉट पुअर, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रिलेट करो, नो हंगर, नो पॉवर्टी एंड ऑल, ठीक है। सो ट्राई टू रिलेट देम ओवर हियर सो दैट योर आंसर लुक्स इन लाइन विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। कल के जैसे गलती मत करना, ठीक है। चलिए
So this is about land scarcity इशू. वैसे बहुत बोरिंग इशू है, ठीक है, इम्पोर्टेंट इशू है, बट मुझे ही बताना थोड़ा सा ये हो रहा है, ठीक है. एनीवेज, सेकंड टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज साइबर थ्रेट्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर, और साइबर थ्रेट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर्स. तो साइबर थ्रेट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर, ये तो डेली बेसिस पे चल रहा है. On almost on a daily basis, you will hear that people have been bluffed, ठीक है, by some or the other con man or con person for XYZ of amount. ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज से, व्हाट्सएप कॉल से, वीडियो कॉल से, XYZ मैसेज आता है SMS से या व्हाट्सएप से भी. ठीक है. सो एज पर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एज पर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, almost 20%, almost 20% of companies across the world, almost 20% of companies across the world, they have been facing some or the other kind of cyber fraud. ठीक है, almost 20% of the companies across the world, they have faced the issue of cyber fraud. ठीक है. Now, what are the reasons for increasing cyber fraud across us? What are the reasons? क्या reasons है that the cyber risk has increased to this extent? क्यों बढ़ा है? More accessibility, the increasing technological innovation, easy access to the new age technology, and lack of awareness among the people with respect to use of those technology. Most of the people, you will find that you send some fictitious link to them, then definitely they will immediately click on the link without being aware कि यार ये किसने send किया and all. ठीक है. So they won't look into कि यार is it, has this link been sent from a right source. ठीक है. Most of the time such kind of links are sent by some unknown number. ठीक है. So people fall trap to such thing. And nowadays some थोड़ा सा advanced level का भी cyber threat बन चुका है. Such links are sent by known people account. ठीक है. For example टेलीग्राम पे वगैरह देखा होगा, the people those who are in your contact list, उन्हीं के contacts के through you get some fictitious links. ठीक है. So rapid digital transformation and the adoption of new age technology has led to rise in this particular issue. ठीक है. Then this is not just the thing, there is also increasing global tensions. There is geopolitical issues because of which there have been attack on the financial sectors of different government agencies. For example, Russia Ukraine war चल रहा है. So they are continuously engaged in attacking the financial firms of each other. ठीक है, financial institutions of each other. In India as well, you people might be aware, a few months ago, the JNPT entire system was hacked. पता है क्या? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बारे में नहीं पता? So entire JNPT का पूरा system hack हुआ था, and the ransomware they asked for XYZ amount of bitcoins. So I'm not sure, millions of dollars of bitcoins उन्होंने मांगे थे as a ransomware. So I'm not sure उसके बाद क्या हुआ. Did the government pay them for the release of the entire system, or the government was able to crack them and re-establish the system? ठीक है. उसके बाद क्या हुआ पता नहीं किसी को. ठीक है. हाँ, या यू मे चेक इट. ठीक है. सो देयर इज इंक्रीजिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर पे साइबर रिस्क और भी ज्यादा बढ़ चुका है. ठीक है. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज lack of strong security, cyber security infrastructure. Lack of strong cyber security infrastructure. Most of the time you, if you are accessing some government website, ठीक है, आपका सिस्टम उसको ब्लॉक कर देता है.
योर सिस्टम ब्लॉक्स इट, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग सम एप्पल प्रोडक्ट्स तो वो तो पहले ब्लॉक कर देता है, ठीक है। सो एप्पल के ही प्रोडक्ट छोड़ो, सैमसंग मतलब एंड्रॉइड सिस्टम वाले भी ब्लॉक ही कर देते हैं, ठीक है। दिस साइट लुक्स सम फिशियस, ठीक है, और दिस देयर माइट बी सम सेफ्टी इश्यूज, ठीक है। सो देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। So that is one another reason for increasing cyber threats in with respect to financial sector in India, ठीक है। Not just in India but all across the world, ठीक है, all across the world. So एक बार reasons को summarize कर देते हैं. That is rapid digital transformation and technological innovation, lack of awareness among the people with respect to use of this technology. Then third is heightened geopolitical tensions, heightened geopolitical tensions. So as a result of which ये issues है. Example Russia and Ukraine you may write. फिर उसके बाद lack of strong cyber security infrastructure, ठीक है. And last में there is lack of swift action and detection. Lack of swift action and detection. You would observe that अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है? If your, let's say, bank account gets hacked, क्या करना चाहिए? हाँ, report it to the bank first, then and inform your contacts, then then wait for the procedure to happen. The first and the foremost thing that you people should be doing is immediately report it to the cyber cell, ठीक है। ऑनलाइन साइबर सेल अवेलेबल है, पूरे इंडिया में अवेलेबल है, बट पीपल आर्ट अवेयर. इमीडिएटली रिपोर्ट इट टू द साइबर सेल, ब्लॉक योर अकाउंट्स इमीडिएटली, ठीक है। सिमल्टेनियसली ये स्टेप्स आपको करने हैं, एक साइड पे फोन करो, एक साइड पे ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है, सिस्टम से. ओके, सो we need to have some swift action. Lack of swift action and detection is there. If you ask a bank employee, sir please block my account, वो आपको 10 सवाल पूछेगा, ठीक है। बट नाउ डेज गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स, इट हैज गिवन यू अथॉरिटी कि आपको जब चाहिए तब आप इमीडिएटली ब्लॉक कर सकते हो. बट स्टिल देयर आर इश्यूज. फॉर एग्जांपल माय एटीएम कार्ड आई हैव लॉस्ट इट few days ago, so I have requested the bank to block my ATM card. बट फिर भी मेरा यूपीआई अभी भी चल रहा है, एंड मेरा यूपीआई इट इज लिंक्ड विथ माय एटीएम कार्ड के नंबर से, ठीक है। बट यूपीआई कैसे चल रहा है आई एम नॉट श्योर, ठीक है. सो देयर इज दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू, ठीक है, देयर इज दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज. नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, इसके इम्पैक्ट्स क्या है साइबर सिक्योरिटी के, क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? ट्रस्ट इश्यूज किसके बीच में? ओके, so definitely people will have trust issues with the new age technology. People will have trust issue with the usage of new age technology. Okay, that is one thing. Then second is it will lead to financial instability. It might lead to financial instability. Now just imagine you are attacking a financial sector. Let's say you are attacking a very prime institution. Let's say आपने आरबीआई को ही अटैक कर दिया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी. आपने आरबीआई के वेबसाइट्स को ही सारी चीजें हैक कर ली. So definitely it will bring a financial instability in the entire nation. It will bring financial instability in the entire nation. So if you are attacking, let's say for example, any bank is attacked by some cyber threat, so definitely people will try to withdraw their deposits, ठीक है. There will be a bank run situation, ठीक है. इकोनॉमी में बैंक रन सिचुएशन आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक है. पीपल रन टू द बैंक टू विड्रॉ देयर डिपॉजिट. क्या पता भाई बैंक के ऊपर साइबर अटैक हुआ है, सिस्टम हैक हुए, बचा हुआ पैसा भी शायद निकाल के लेना जाए, ठीक है. सो दैट विल ब्रिंग अ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन द एंटायर नेशन. देन इट अफेक्ट्स द गवर्नमेंट्स फंक्शनिंग. एज वी हैव सीन जेएनपीटी का सिस्टम हैक किया था, चेक कर लिया, ठीक है. सो कौन सा था वो? हम्म, ओके. Okay, so it didn't affect as per news report, it didn't affect the cargo much. But just imagine a very strong level of cyber attack is there, which even you can say, our ethical hackers are not able to break it. Then it will cause chaos. Because as we have seen, port infrastructure के मामले में almost 80 कितना था 95% of the trade by volume
it's through ports, is through ports, and 70% by value is through ports. So it will have a significant impact on the entire port infrastructure. Okay, so there will be credit and market losses as well. There will be credit and market losses as well. As per IMF, as per IMF, because of such cyber attacks on financial institution, there have been economic losses to the tune of 1 to 8%. ठीक है, 1 से 8% के बीच में अलग अलग साल में अलग अलग लेवल का आपको इकोनॉमिक लॉसेस देखने को मिले हैं टू डिफरेंट कंट्रीज और टू डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. As per IMF report, some financial institutions have faced economic losses to the tune of 1 to 8%. ठीक है, because of the cyber attack. ठीक है, then because of cyber attack, as you said, trust issues वगैरह बढ़ जाते हैं. So people will have issues with respect to data integrity, कि हमारा क्या क्या data access हो रहा है and all. आपका सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पूरी दुनिया को दिख रहा है. ठीक है, आपका कहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर वगैरह हो रहा है. इफ द एंटायर hackers they come to know, then definitely they will target you accordingly. ठीक है, if you are spending lot of money on shopping XYZ products, ठीक है, clothes and all, so definitely वो आपको उसी टाइप के एड्स फिर दिखाते रहेंगे. ठीक है, so that is manipulating your mind, so that is a harm on your integrity. ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी आपके ऊपर, so ethical aspect भी आ जाता है यहाँ. ठीक है, so impacts है. so इसी से रिलेटेड अभी इसको थोड़ा सा सुधारना है, तो इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है. Challenges with respect to improving this or overcoming the cyber threat or dealing with the cyber threat. Infrastructure. Lack of proper government infrastructure to deal with the cyber threat. There is lack of proper laws with respect to dealing with the cyber threat. There is lack of regulatory authorities. ठीक है, आप पुलिस स्टेशन में साइबर फ्रॉड हुआ है, आप पुलिस स्टेशन में चले जाओ, सर किसी ने मुझे फेक कॉल किया कि XYZ में ऑफिसर हूँ और आपके ऊपर ये XYZ केस है, सो मैंने उनको पैसा ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, सो किसके पास जाना चाहिए, आप किसके पास जाओगे. आप बैंक के पास नहीं जा सकते क्योंकि आपने पेमेंट इनिशिएट किया है. बैंक तो सीधे सीधे बोलेगा, सर दे आस्क्ड यू फॉर मनी, यू पेड द मनी एंड you have used your PIN and transaction details, so it is the like a transaction that you have initiated. We have nothing to do with that. तो वो क्या करेगी बैंक, तो अकाउंट भी आपका, आप बोलोगे मेरा ब्लॉक कर दो, हाँ वो बोलेंगे ठीक है ब्लॉक कर देते, बट रिकवरी का क्या. वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसका वैसे उसके फैमिली में एक ही इज एट अ वेरी सीनियर मैनेजर इन XYZ बैंक. वो सीनियर मैनेजर है, बैंक में ही है. ठीक है, he received a call last month की बात है. He received a call from XYZ agency pretending that they are from narcotics department. ठीक है, pretending from narcotics department. He is a senior level manager. ठीक है, and they asked, sir, this is a very sensitive information, so we'll make a WhatsApp call. So they made a WhatsApp call to him. ठीक है, and they asked him to initiate a payment of 16 lakh rupees और इन्होंने पे भी किया. ये ऑलरेडी सीनियर लेवल पे मैनेजर है. सो पीपल, सच पीपल आर फॉलोइंग फॉर सच काइंड ऑफ ट्रैप्स. सो यू कैन जस्ट इमेजिन अबाउट द कॉमन पीपल के बारे में तो क्या ही होगा. ठीक है, 16 लाख रुपए, फिर अभी वो खुद मैनेजर है, वो कुछ नहीं कर पा रहे. ठीक है, सो he called me and he asked me. So there were a couple of friends of mine in Mumbai. तो उनको मैंने बताया in government services, different government services. So I shared the information. So they guided him accordingly. ठीक है, सो ऐसे इश्यूज होते हैं. सो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म. सो चैलेंज इज देयर इज लैक ऑफ रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क्स. देयर आर लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. ओके, technological innovations, for example, nowadays you would have seen advertisement of one phone. ठीक है, एक XYZ कंपनी का फोन है, अगर आपको ऐसा कोई फेक वीडियो कॉल करता है, so immediately that they have an AI enabled tools that will immediately tell that is whether that is a genuine call or it is a fake call. ठीक है, और उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट मैंने कल ही देखा था. ठीक है, तो यहाँ से याद आया. ठीक है, सो देयर इज कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन इंडिया, लैक ऑफ कोऑपरेशन. ठीक है,
with respect to such kind of economic fraud, if you go to normal police station, they won't entertain your complaint at all. They won't entertain your complaint because it is not under their jurisdiction. You have to go to the cyber cell only. ठीक है, और साइबर सेल भी फिर वो डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे एक ही जगह पे होगा. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल एक जगह पे होगा और आप कहाँ से भटकते भटकते जाओगे. ठीक है. सो देर इज लैक ऑफ कॉपरेशन. ऐसा नहीं कि आपने ये पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर दी तो वो इमीडिएटली साइबर सेल हो जाए, वो रिक्वेस्ट ही नहीं ले. ठीक है. चैलेंजेस रिलेटेड टू लीगल फ्रेमवर्क है. नेचर ऑफ क्राइम. Nature of crime. Every time with respect to cyber fraud, the type of crime that is changing. People first used to hack your system. They used to hack your password. They used to change the password and they used to be like, अगर आपको आपका अकाउंट रिलीज करना है तो इतना इतना पैसा हमें आप ट्रांसफर करो. नाउ दे हैव मूव टू वीडियो कॉल. ठीक है. सो द नेचर ऑफ क्राइम विथ रिस्पेक्ट टू साइबर थ्रेट इज चेंजिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज कि ऐसे टाइप के चैलेंज को कैसे डील करोगे आप. ठीक है. सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चैलेंज है. ठीक है. So there are procedural hurdles and delays in cybercrime reporting, just as I have said. Okay. So these are all the challenges with respect to uh, cyber threat in financial sector. एक और challenge है, that is you all are aware about Jandan Aadhaar mobile scheme. ठीक है. JAM scheme, JAM Trinity. So under Jandan Aadhaar scheme, government have asked people to open bank accounts. इंडिया में बहुत सारे अकाउंट्स ओपन हो गए. So people have now have government bank account, but they now have bank account, but not everyone is using that bank account. ठीक है. स्पेशली इन विलेजेस, पुअर पीपल, उनको बैंकिंग के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं, वो इतना यूज भी नहीं कर रहे. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, their account, if they are not making any transactions for XYZ number of days, after certain period of time, it becomes inactive. So वो account अभी inactive हो गया. So some people, what they do, they hack the system. They will simply check which all accounts are inactive. They will make fraud transactions through those inactive accounts. So their accounts are being used as a mule account. ठीक है. डोंकी अकाउंट, डोंकी की तरह उनके अकाउंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं फॉर मनी लॉन्ड्रिंग. Okay, for money laundering. So such inactive accounts are being targeted for the fraud transactions. So it is a kind of a challenge that they are facing. Okay, that we are facing. So इसको overcome करने के लिए वापस से initiatives. So what initiatives have the government undertaken to overcome this? क्या initiatives लिए हैं, कुछ आइडिया है? See, under Digital India Mission, we are specifically focusing on digital literacy. ठीक है. डिजिटल लिटरेसी इशू है यहाँ पे. ठीक है. सो डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल इंडिया मिशन टू एंश्योर लिटरेसी से रिलेटेड. देन गवर्नमेंट हैज आल्सो कम अप विद वन इनिशिएटिव, दैट इज चक्षु. लिख देता हूँ. चक्षु, अ टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म. ठीक है. चक्षु मीन्स आईज, कीपिंग एन आई ऑन. ठीक है. So government is through this initiative, government has developed a platform through which it is keeping an eye on all kinds of cyber related threats. ठीक है. It is keeping an eye on all related cyber related threats. फिर उसके बाद और भी कुछ चीजें जैसे कि सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये चक्षु उसी का हिस्सा आता है. फिर उसके बाद कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है इंडिया में, CERT in Computer Emergency Response Team in India. Then we also have Financial Intelligence Unit which checks for fraud transactions. ठीक है. अचानक से किसी के अकाउंट पे 2-4 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो ये लोग नजर रखते हैं. ठीक है. वो रिपोर्ट करना पड़ता है आपको, कहाँ से आए कैसे आए, वरना पता चले टैक्स का आपके ऊपर नोटिस आ गया. ठीक है. सो दीज आर ऑल द इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन अंडरटेकन. 2-4 इनिशिएटिव्स याद रखना, आपका काम बन जाएगा. सो व्हाट आर वे फॉरवर्ड, आगे और क्या करना चाहिए? या ओल्ड एज पीपल. Okay, so we need to have ethical hackers with us
to work on the development of the systems. ठीक है? So we need to hire digital hackers, or you can simply say not digital hackers, we need to hire ethical hackers. ठीक है? और we need to improve human resources with respect to it. ऐसे लिख देना, हैकर वर्ड इस्तेमाल ही मत करना, एथिकल हैकर भी अवॉइड करो तो चलेगा. वी नीड टू हैव skilled human resources. We need to have skilled human resources to tackle this issue, cyber threat issue. Then we need to make citizens aware for periodic check of their devices. Periodic check of their devices or periodic updation of their devices in order to avoid any cyber threat. ठीक है? If your systems are entirely updated every time, so the chances of hacking becomes less. ठीक है? Yeah, we need to have a proper data protection law in order to ensure protection of data integrity. And not just the social media companies, but also the financial tech companies. ठीक है? Now we are having financial tech companies. सारे ये क्या है? Financial tech companies है. Google Pay, Phone Pay, okay, Paytm. These are financial tech companies. Mhm. ठीक है? So people should be aware that their card details they can be utilized. ठीक है? So ये सारी चीजें हैं. So way forward में awareness and all. ठीक है? Proper laws, proper framework होना चाहिए. Digital infrastructure should be improved. Human resources should be improved. यही सारी चीजें होंगी. ठीक है? So if you have this data, ठीक है, साइबर थ्रेट से रिलेटेड, फिर फाइनेंशियल सेक्टर को भूल जाओ. ठीक है? फाइनेंशियल सेक्टर को भूल जाओ और साइबर थ्रेट से रिलेटेड सब जगह पे सेम चीज लिख सकते हो. ठीक है? एट ऑल प्लेसेस यू कैन राइट सेम थिंग्स. ठीक है? साइबर थ्रेट और रेडिकलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, रेडिकलाइजेशन थोड़ा सा सोशल इशू आ जाता है, तो वहां पे जस्ट इंश्योर कर देना वॉट एवर इम्पैक्ट, चैलेंजेस एंड इनिशिएटिव्स दैट यू आर राइटिंग, दे आर ओरिएंटेड टू सोशल एस्पेक्ट्स. ठीक है? वो थोड़े से सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड लिख देना. ठीक है? सो ये एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन दिया है, इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन लिख लेना. Digitalization has made digitalization has made the financial sector digitalization has made the financial sector more vulnerable to cyber attacks. Full stop. Digitalization has made the financial sector more vulnerable to cyber attacks. Full stop. Critically analyze this statement. Critically analyze this statement in the context of India. Critically analyze this statement in the context of India. ठीक. So these are the two questions. यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है, वाईफाई नहीं चल रहा है.
Skyward. Airtel connecting. Password change. So I'm sharing notes with you people. इसको यूज करके आंसर लिखो. Some added information is there.